Assalamu alaikum everyone. So after a lot of public request, ये एक प्रोजेक्ट है जो हमने अपनी वर्कशॉप पे कंप्लीट किया है. दिस इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव के टर्बो होंडा सिविक 1996. इस पे सारा काम we've done ground up in our workshop. I will give you a brief review of the car and I'll walk you through the details. तो पहले गाड़ी के एक्सटीरियर पे आते हैं. We have smoke lights in the front. We have a speed factory intercooler. जो टायर सेटअप इस पे हम रन कर रहे हैं, these are Toyo Proxies R888Rs. इसके ऊपर टायर प्रोफाइल चल रही है 225 50 15 225 50 15. मूविंग अलॉन्ग साइड द कार, इसके ऊपर काफ़ी एक बीफी फिटमेंट बनी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, एग्रेसिव लुक देती है गाड़ी का. टुवर्ड्स द बैक ऑफ द कार आप नीचे की तरफ आ जाएँ तो यू कैन सी द सब फ्रेम, द ड्राइव ट्रेन. मूविंग अप टॉप, इस पर फेरियो वाला स्पॉइलर आ गया इसका हमारा. स्मोक रियर लाइट्स आ गई और इस साइड पे वही गाड़ी की एग्रेसिव लुक कंटिन्यू हो जाती है. एक्सटीरियर से ये गाड़ी मोस्टली स्टॉक लुक ही दे रही है, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द व्हील्स, क्योंकि एक सर्टल डेली ड्रिवन गाड़ी है. नाउ आई विल वॉक यू थ्रू द इंजन एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कार. So this is basically a K24 K20 Type R Frankenstein build, which is turbocharged. This has a Precision 6466 turbocharger with the T3 housing, a Skunk 2 intake manifold. This is the Skunk 2 Ultra. We have a Sheepy Racing exhaust manifold on the back, the tile wastegate. We have Hasport mounts on the car all around. This is aluminum radiator, Aeromotive FPR, inline fuel filter, and custom in-house fabricated intercooler piping, which was fabricated at our workshop. Now we'll start up the car for you, give you a brief tour. Oh, by the way, this car has a beautiful purple engine bay. It really stands out with the monstrous engine. अब हम ड्राइव ट्रेन पे आते जाएं तो दिस कार हैज़ अ कस्टम मेड 6-speed gearbox. दिस इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव 6-speed gearbox है, हमने कस्टम बनाया है इसके लिए. ऑल व्हील गियर वैसे 5-speed में आता है, बट वी हैव एडेड 6 gears इनटू द गियर. उसके बाद बाकी की ड्राइव ट्रेन पे आप आएँ तो उसके लिए आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा. अपनी गाड़ी हमारे पास ले आइए, उसको हम ऑल व्हील कर देंगे, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्क्लोज दी ड्राइव ट्रेन एज ऑफ नाउ. दिस कार इज़ रनिंग एट अराउंड 9 PSI राइट नाउ, और उस पर जो ये पावर बना रही है वो हम आपको अभी दिखा देते हैं इसके रन लेके. इसके अलावा हम बाकी इस गाड़ी के ऊपर आ जाएँ तो दिस इज़ माशाल्लाह वेरी नाइस, वेरी सटल डेली ड्रिवन फीलिंग कार with a monstrous setup. This engine is producing around 450 to 500 as per my feels. बाकी ये है कि we don't just talk, we did our work and we showed the results, and this car has been running for around 2 months now. हम इस पे तकरीबन at least 40 to 50 runs ले चुके हैं ट्यून के दौरान, टेस्टिंग के दौरान, and माशाल्लाह this car is running flawless since day one. So now we're gonna go get some runs and show you the गाड़ी के इंटीरियर में आते हैं तो we can see Type R style door cards. We have beautiful bucket seats with Sparco seat belts. These are of 3-point harness, which means 1, 2 and the third buckle goes in here. उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे स्टीयरिंग व्हील पे. तो दिस इज़ अ मोमो ओरिजिनल स्टीयरिंग व्हील. We have a Grady Sirius boost gauge. We have a AEM AFR gauge, which basically tells you your air fuel ratio. We have a Duffy Z-Link. We have a K-Tune billet shifter with a K-Tune gear knob. उसके बाद we have this Japanese Ferio automatic climate control. This is electronic climate. And बाकी ये गाड़ी जो है ये एक डेली ड्रिवन गाड़ी है, 4-seater 4-door डेली ड्रिवन कार. इसका स्टार्टअप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. माशाल्लाह आप लोगों के सामने ही है. वी डोंट नीड टू क्लेम एनीथिंग. दिस कार इज़ रनिंग अ वाइब्रेंट एग्जॉस्ट सिस्टम, और ये आइडल पे आपको महसूस भी नहीं होने देगी कि दिस व्हाट सेटअप इट्स रनिंग अंडर द हुड. This is the sound from the back. Even at the front, this car is totally silent, like a stock K24.
Let's go have some runs.